Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine you're walking down a street, pretty busy maybe, and you spot a small, kind of unassuming fish symbol sticker, you know the one, in the window of a local coffee shop. Mm-hmm. Or maybe you're stuck in traffic looking at the car ahead and it's got one of those WWJD bumper stickers. Right, you see those around. Exactly. And these aren't just like random decorations, are they? They feel like quiet signals, but pretty powerful ones. Signals of something, significant, influencing the marketplace, influencing our choices as consumers every single day. And for some researchers, those little everyday things, they actually sparked a whole academic journey, trying to figure out what's really going on under the surface of, our buying habits. Yeah, definitely. And what we're about to explore with you today is actually a summary. It's been carefully distilled using a large language model from a really fascinating commentary article. Mm-hmm. This piece is titled, A Common Sense Commentary on Religious Values and Consumer Behavior. It was written by Lisa E. Bolton from the Pennsylvania State University, Smeal College of Business. Yeah, and it was published in the Journal of Consumer Psychology. Now, for those of you maybe navigating the world of academic publishing or just curious, this journal is recognized as an FT50 listed journal. Which is a big deal. It really is. It basically means it's seen as one of the top 50 journals in business research globally. So, highly influential. And it's important to know this isn't just a standalone paper, right? It's actually part of a bigger, vital research conversation. One that the journal itself is spearheading. Okay. It builds directly on foundational work by Eric Wyaglozzo and Adam Cohen. Their article was Religious Values and Consumer Behavior. So for anyone listening who's maybe just starting their own research journey, or even if you're just, curious about how religion subtly connects with our lives as consumers, this commentary is a really, really insightful place to start. Absolutely. And we genuinely hope that, whether you subscribe to discussions like this or not, you'll take a few moments to actually read the original article. It's thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed. It really is. It's kind of a masterclass in seeing how academic conversations unfold. How ideas get presented, maybe challenged, built upon. The link is right there in our show notes for you. Definitely worth the read. So, okay, we mentioned those symbols, the fish, the bumper sticker. But why are we even talking about religion and consumer behavior together? It might seem like an odd pairing at first glance. It might seem that way initially. But what makes this connection so important to understand? Well, that's a great question. And honestly, when you look at the numbers, particularly from sources like Pew Research, it becomes incredibly clear. Religion is profoundly important to a huge number of people around the globe. How huge are we talking? We're talking vast regions. Think Africa, the Middle East, South Asia. In many countries there, a large majority of people say religion is very important in their daily lives. Okay. Even in the USA, it holds, let's say, more sway than in places like Europe or Canada. Right. Just to give you some figures, you find 93% in Indonesia and 88% in Nigeria saying religion is very important. Compare that to 53% in the USA. Still over half, though. Still over half, exactly. And even within the U.S., something like 62% of adults identify as Christians, and a significant chunk regularly attend services or read religious texts monthly. It's woven into the fabric of many lives. So given how central it clearly is for so many people, globally and in the U.S., you'd think consumer research would be absolutely full of studies looking at its influence. You would think so, yeah. But what we actually find is, kind of the opposite, isn't it? It really is. Why do you think that gap exists? Is it just hard to study, or what might explain this, striking difference between the real-world impact and the academic focus? That's a really interesting puzzle for anyone looking at this field, and the article points this out directly. Since 2015, only a tiny handful of articles using religion or religious as keywords have actually appeared in the top consumer research journals. Wow, only a handful. Yeah, seriously. We're talking just one in the Journal of Consumer Psychology, 3 in the Journal of Consumer Research, 2 in the Journal of the Association for Consumer Research, and 2 in Journal of Marketing Research. That's surprisingly low. It is, isn't it? It's a stark imbalance. As for why? Well, maybe one challenge is just the complexity of it all.
how do you measure something so personal, so multifaceted as religious belief without, oversimplifying it? That makes sense. Or perhaps there's been a perception, maybe fading now, that the topic is too sensitive, or maybe even too niche. Even though the data clearly shows it's anything but niche. Right. It definitely signals a wide open area for new scholars, for anyone listening who's looking for research opportunities. Okay, that's a great point. So religion is important, under-researched in this specific context. How does it actually work its way into our buying habits? What we buy, where we spend our time, how we feel about brands. The article suggests it's often through something it calls religious values. Exactly. And this brings us to a really crucial point. The author, Lisa Bolton, emphasizes, what are these religious values specifically? Because, okay, there are thousands of religions globally. Right. But it's quite striking how many share a common set of core values, maybe with different emphasis, different interpretations, but the core is often similar. Okay. And the author makes a really compelling case for infusing these often abstract values with their specific religious roots, rather than just treating them as generic moral ideas. Okay, that's interesting. Could you give us maybe a couple of concrete examples of these shared values, and perhaps touch on how their religious origins might subtly shape consumer choices, just to make it feel more, tangible? Absolutely. Let's take love and compassion. You see it everywhere, right? Yeah. The Bible's love thy neighbor, the Quran's focus on mercy. It's central in Buddhism, Hinduism. Now, in a consumer context, what might that look like? Well, it might mean you prioritize businesses that show ethical labor practices, or maybe companies that support community projects. It aligns with wanting well-being for others. Okay, that makes sense. What else? Then there's justice and fairness. Again, commanded in the Quran, proclaimed in the Bible, central to Judaism, Buddhism. Right. For consumers, this could translate into actively seeking out fair trade products, or maybe boycotting brands they see as exploitative, or even just valuing transparent pricing, feeling like you're being treated fairly. And what about things like forgiveness? Does that play a role? It can, yeah. Forgiveness and reconciliation, another universal theme. You find it in Luke, in the Bible. The Quran calls for gracious forgiveness. It's emphasized in Buddhism, Judaism. So how does that connect to buying stuff? Well, think about how someone reacts if a company messes up. A product fails, or customer service is terrible. Someone influenced by this value might be more open to that company's apology, or their attempts to make things right, to achieve that reconciliation. Interesting. And are there values more related to, say, our possessions or the environment? Definitely. Take gratitude and thankfulness. This is encouraged across so many religions. Quran, Bible, it's a source of blessing in Hinduism. This idea of appreciating what you have, it can influence behavior towards, say, less wastefulness, maybe valuing products that last longer, or perhaps prioritizing experiences over just accumulating more and more material things. Right. Less focus on just stuff. Exactly. And then there's stewardship. This idea that humans are caretakers, or maybe successors, responsible for the earth. You find this in the Quran, the Bible, but it's also strongly echoed in many indigenous religions. Buddhism, Shintoism. And the consumer link there seems obvious sustainability. Precisely. It might lead consumers to favor sustainable products, try to reduce their environmental footprint, support eco-conscious brands. The key takeaway is that these values aren't just abstract beliefs floating around. They actively, as the author puts it, motivate people's actions and serve as guiding principles in their lives. And that life inevitably includes their consumer choices, what they buy, why they buy it, how they interact with companies. It's all connected. Okay, so it seems logical then. If you know someone's religious background, you might think you can predict their behavior based on these core values like compassion or stewardship. It seems logical, yes. But the article throws in a really crucial cautionary tale, doesn't it? Based on more Pew Research data. And this feels like a vital point for anyone thinking about researching this or even just understanding it day to day. Exactly. It really forces us to move beyond simple assumptions. It's a great example of why nuance is so critical here. So what's the caution? Well, take gratitude, for example. The data shows that 69% of religiously affiliated U.S. adults report feeling gratitude weekly. That's compared to 62% of all U.S. adults. So higher among the affiliated. Okay, seems straightforward. But then you look at support for government assistance to those in need. It's actually lower among the religiously affiliated, 40% versus 46% overall. Oh,
That's counterintuitive if you just think about compassion or gratitude. Right. It highlights some key complexities that any researcher digging into this needs to wrestle with. What are those complexities? Well, first, many of these values, gratitude, compassion, justice, they aren't exclusive to religion. They're also deeply important secular human values. Attributing them only to religion misses part of the picture. Good point. Second, just making broad comparisons between religious and non-religious can be really misleading. Different religions, even different denominations within a religion, express and prioritize values differently. So gratitude might look different depending on the faith. Exactly. It might be expressed through prayer for one group, through charity for another, through community service for a third. You can't just lump them all together. You need to look beyond those broad strokes. That makes sense. And third, and this is really critical, religion is rarely the only thing driving someone's behavior. Other powerful factors, things like political identity, cultural norms, maybe socioeconomic status, they can significantly shape or moderate or even sometimes override religious values entirely. So it's not just one factor in isolation. Never. That's why understanding the nomological network is so important for research. Nomological network. Sounds technical. Yeah, it just means understanding how all these different factors, religion, politics, culture, personal beliefs, how they all interact and influence each other. It's about seeing the whole interconnected system, not just one isolated piece. Right. Seeing the bigger picture. Precisely. Okay, so we've established it's important, it's complex, values play a role, but aren't the whole story. Yeah. What does this all mean for consumer behavior itself? The article uses a visual, right, a conceptual model. Yes, it does. It lays out visually how religion connects to values and then how those values might influence various consumer actions. And it touches on quite a range of things. It does. Examples like materialism, financial decision-making, even how people respond when a company messes up service recovery. One area it really zooms in on because it's so critical today is sustainability. Sustainability. Okay, how does the religious connection play out there, given the complexities we just talked about? Well, the article looks at both social and environmental sustainability, connecting them to the bigger picture like the UN Sustainable Development Goals or SDGs. The global goals for things like poverty, education, climate. Exactly. So for social sustainability, I think SDGs like eradicating poverty, ensuring quality education values like love and compassion or justice and fairness seem like a perfect fit, right? Soon too, yeah. But interestingly, the actual empirical evidence on religion's impact here is described in the commentary as ambivalent. Ambivalent, meaning mixed or unclear. Yeah, mixed, unclear, not a straightforward positive link, perhaps because applying values like justice can vary so much. Or maybe the focus in religious contexts often shifts from individual consumer choices like what you buy to broader actions like charity when tackling big issues like poverty. So it's not a simple cause and effect with purchasing habits. Other cultural factors are likely involved too. Okay, so social sustainability impact is a bit murky. What about environmental sustainability? We talked about stewardship. That seems like it should make religious individuals natural environmental champions. You'd absolutely think so. And it seems highly relevant to SDGs like clean energy, protecting life on land and water. But I sense a but coming. Yes, there's always nuance, isn't there? Here's where it gets tricky. That value of stewardship, the duty to protect the earth, often exists alongside another concept, sometimes called dominionship. Dominionship. Yeah, the idea that humans have a right, maybe even a divinely given right, to use the earth and its resources for human benefit. So protect versus use, they could pull in opposite directions. Exactly. That duality can lead to very different outcomes. Some interpretations of dominionship could potentially undermine environmental protection efforts. Someone might feel less personal responsibility if they believe human use is paramount, or, that divine intervention will ultimately handle things. Right. And are there other factors complicating the environmental link? Definitely. The commentary mentions things like skepticism towards science, which can be higher in some religious groups, or specific beliefs, like belief in a controlling God who dictates outcomes regardless of human action, or certain end times beliefs. And again, political partisanship often plays a huge role in environmental attitudes, sometimes more than religious affiliation itself. So again, it's complicated. It really underscores the message for anyone researching this.
The relationship between religion and environmental behavior is rarely simple or straightforward. You absolutely have to account for these interacting beliefs and external factors to get the full picture. That's a really important takeaway. So ultimately, when you're thinking about religious values and how they impact what consumers do, the author offers a really powerful piece of advice, especially for anyone starting research in this area. What's the advice? Simply put, visit the source. Visit the source, meaning Look directly at the religious writings, the teachings, the scriptures themselves. How do these foundational texts actually talk about values? And then crucially, how do people, real people, interpret those teachings and act on them in their everyday lives? It's about the text and the lived experience. Got it. It's about understanding that specific connection, that interplay between the teaching and the action. Precisely. For instance, the article shares a really interesting finding related to service recovery. Right, when a company messes up. Yeah. It found that religious salience, basically how much religion is on someone's mind at that moment, can lead to a more positive response to a company's failure, but, and this is key, only if that failure is followed by some kind of recovery effort from the company. So not automatic forgiveness. Not automatic, no. And this lines up really well with religious teachings about repentance. Think concepts like tawbah in Islam or teshuvah in Judaism. Forgiveness isn't just granted, it's often triggered by seeing a signal of change, an effort to make amends. Wow, that's a direct link between theology and customer response. It really is. Or think about waste. Many religious teachings from the Quran and the Bible, for example, suggest an aversion to wastefulness. This can foster a waste not, want not kind of mindset. Okay. These aren't just abstract ideas, they function almost like practical roadmaps for understanding consumer psychology, potentially predicting how people might behave regarding consumption, disposal, and value. It's fascinating how the author's own journey, starting with just noticing a fish symbol or a bumper sticker, led to exploring these deep connections. It really reminds us that important research questions can pop up from anywhere, from just observing the world around us. Absolutely. So maybe a final thought for you as you embark on your own research or just think about these things. How might the really specific, nuanced teachings of different faiths, going beyond just those broad values we discussed, offer an even deeper insight? Insight into why consumers do what they do. And perhaps could understanding that even open up new ways to tackle some of the big global challenges we face? The possibilities are truly vast, honestly. And the landscape, as we've seen, is really ripe for more thoughtful, rigorous exploration. We genuinely hope this conversation has maybe sparked some curiosity for you to explore this complex, really rich area further. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। দোকানে দেখলেন একটি মাছের প্রতীক, আবার অন্য কোথাও কোনো গাড়ির পিছনে স্টিকার WWJD, মানে যিশু হলে কি করতেন। খুব সাধারণ, তাই না দুটো দৃশ্য? হ্যাঁ, একদম সাধারণ। কিন্তু লেখিকা লিসা বোল্টন এইগুলো দেখেই ভাবতে শুরু করেন ধর্ম আর আমাদের রোজকার কেনাকাটা এর মধ্যে কি কোনো গভীর সম্পর্ক আছে। এই ভাবনা থেকেই আজকের আলোচনা শুরু। হ্যাঁ, আর দেখুন এই আলোচনাটা কিন্তু মূলত একটা বৃহৎ ভাষা মডেল বা LLM ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, মানে মূল প্রবন্ধের একটা সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে। আমরা সেখান থেকে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো। ঠিক, আর মূল প্রবন্ধটা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জার্নালে, জার্নাল অফ কনজিউমার সাইকোলজি বা JCPতে। হ্যাঁ, কনজিউমার সাইকোলজির জগতে এটা অন্যতম সেরা, খুবই প্রভাবশালী একটা গবেষণা পত্রিকা, FT50 তালিকাতেও আছে। প্রবন্ধটির লেখিকা লিসা বোল্টন, উনি পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি স্মেল কলেজ অফ বিজনেসের অধ্যাপক। আর লেখাটা আসলে একটা মন্তব্যধর্মী লেখা, মানে অ্যাগ্লোজো আর কোহেনের একটা কাজের উপর ভিত্তি করে লেখা। JCP জার্নাল একটা বৃহত্তর গবেষণা সংলাপ চালাচ্ছে, তারই অংশ এটা। বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা হয়তো নিজের গবেষণা শুরু করার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য আজকের আলোচনাটা বেশ কাজের হতে পারে। একদম। আর আমরা সবাইকে অনুরোধ করব, আপনারা এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার হন বা না হন, এই চমৎকার আর কঠোরভাবে রিভিউ করা মূল প্রবন্ধটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকছে। আচ্ছা, তাহলে আসা যাক মূল কথায়। ধর্ম মানে রিলিজিয়ন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। অবশ্যই।
পিউ রিসার্চের কিছু ডেটা দেখলেই বোঝা যায়, যেমন ধরুন আমেরিকা, ভারত বা ইন্দোনেশিয়া, এই সব দেশে ধর্মের প্রভাব বিরাট। অবশ্যই ইউরোপ বা কানাডায় হয়তো ততটা নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যখন ক্রেতাদের আচরণ নিয়ে গবেষণা হয়, মানে কনজিউমার বিহেভিয়ার নিয়ে, তখন ধর্মের প্রভাব নিয়ে কাজ কিন্তু খুবই কম দেখা যায়। ঠিক তাই। আপনি যদি 2015 সাল থেকে টপ কনজিউমার রিসার্চ জার্নালগুলো দেখেন, জেসিপি, জেসিআর, জেএসিআর, জেএমআর, দেখবেন এই বিষয়ে আর্টিকেল প্রায় নেই বললেই চলে। এখানেই বোল্টন একটা জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন। কি সেটা? উনি অ্যাগ্লোজো আর কোহেনের কাজের সূত্র ধরে বলছেন, শুধু সাধারণ বা বিমূর্ত মূল্যবোধ, মানে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভ্যালুজ, যেমন শোয়ার্টসের তত্ত্বে আছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট নয়। তাহলে বোল্টনের প্রস্তাবটা ঠিক কি? উনি কোথায় আলাদা হতে বলছেন? বোল্টন জোর দিচ্ছেন যে এই মূল্যবোধগুলোর সাথে তাদের নির্দিষ্ট ধর্মীয় উৎসের একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। মানে উনি বলছেন আসল ব্যাপারটা লুকিয়ে আছে নির্দিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা আর অনুশাসনের গভীরে। ও আচ্ছা, যেমন ধরুন বাইবেল বা কোরআনের নির্দিষ্ট আয়াতে। কয়েকটা উদাহরণ দিই। ভালোবাসা ও সহানুভূতি। বাইবেলে আছে তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো। কোরআনেও সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখানোর কথা বলা আছে। স্টিউয়ার্ডশিপ, এই ধারণাগুলো প্রায় সব প্রধান ধর্মেই পাওয়া যায়। বোল্টন একটা দারুণ কথা বলেছেন, গড ইজ ইন দ্য ডিটেলস, মানে ঈশ্বর খুঁটিনাটিতেই থাকেন। তার মানে এই মূল্যবোধগুলোর পেছনের ধর্মীয় প্রেক্ষিত আর সূক্ষ্মতা বোঝাটা খুব জরুরি। একদম। কিন্তু এই মূল্যবোধগুলো কি শুধুই ধর্মীয়, নাকি এর অন্য কোনো দিকও আছে? হ্যাঁ, এখানেই বোল্টন একটি সতর্ক করেছেন। পিউ রিসার্চের ডেটা ব্যবহার করে উনি দেখিয়েছেন এই মূল্যবোধগুলো কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষও হতে পারে, আবার একই ধর্মের মানুষের মধ্যেও এর প্রয়োগ আলাদা হতে পারে। আচ্ছা। এমনকি ধর্ম ছাড়াও অন্য অনেক কিছু, ধরুন রাজনৈতিক পরিচয়, সেটাও কিন্তু আমাদের আচরণকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারে। তাই ব্যাপারটা এত সরল না। বেশ জটিল তাহলে বিষয়টা। আচ্ছা, বোল্টন কি দেখিয়েছেন যে এই ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো শেষ পর্যন্ত কিভাবে ক্রেতাদের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে? হ্যাঁ, বোল্টনের একটা চিত্রে, মানে ফিগার 1-এ, এই পথটা দেখানো হয়েছে। ধর্ম থেকে আসছে নির্দিষ্ট ধর্মীয় মূল্যবোধ, আর সেটা প্রভাবিত করছে ভোক্তা আচরণকে। একটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়। অবশ্যই। ধরুন স্থায়িত্ব বা সাস্টেনেবিলিটির কথা। জাতিসংঘের কিছু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজিজ আছে, তাই না? হ্যাঁ, জানি। যেমন ধরুন সামাজিক স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূর করা, ক্ষুধা দূর করা, সুস্বাস্থ্য, মানে এসডিজি 1, 2, 3, 6, বা শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, এসডিজি 4, 5, 8, 16। ভালোবাসা, সহানুভূতি, ন্যায় বিচারের মতো ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো এই সামাজিক স্থায়িত্বের লক্ষ্যগুলোর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু গবেষণায় এর প্রভাব সবসময় একরকম দেখা যায় না, ফলাফল বেশ মিশ্র। আর পরিবেশগত স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সেখানে কি দেখা গেছে? সেখানেও একই রকম ব্যাপার। পরিবেশ রক্ষার জন্য যে জিম্মাদারি বা স্টিওয়ার্ডশিপের ধারণাটা, সেটা জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলোর, যেমন এসডিজি 7, 13, 14, 15 সাথে মেলে। এই ধারণা কোরআন বা বাইবেলেও আছে। কিন্তু এখানেও কি কোনো কিন্তু আছে? হ্যাঁ, আছে। অনেক সময় এর সাথেই আবার কর্তৃত্ব বা ডোমিনিয়নশিপের ধারণা চলে আসে, মানে পৃথিবীর ওপর মানুষের একচ্ছত্র অধিকার, যা অনেক সময় পরিবেশ শোষণের দিকে ঠেলে দিতে পারে। ও আচ্ছা। ফলে এখানেও প্রভাবটা সরল রৈখিক নয়, ফলাফল এখানেও মিশ্র। বুঝতে পারছি। সম্পর্কগুলো বেশ গভীর আর কিছুটা পরস্পর বিরোধীও মনে হচ্ছে। একদম। আর এই জন্যই বোল্টন বলছেন, শুধু সাধারণ মূল্যবোধ নিয়ে কথা না বলে মূল ধর্মগ্রন্থগুলো পড়া আর তার ভেতরের নির্দেশগুলো বোঝা দরকার। ইন্টারেস্টিং। যেমন উনি আর ওনার সহকর্মীরা আগের গবেষণায় দেখিয়েছেন কিভাবে ব্যবসায়িক ব্যর্থতার পর সংস্থার ক্ষমা প্রার্থনা বা অনুতাপ করার ধারণাটা ক্রেতাদের ক্ষমা করার মানসিকতার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। এটা তো সরাসরি ধর্মীয় ধারণা। হ্যাঁ, ঠিক। আবার অপচয় না করার যে ধারণা, মানে ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট, সেটাও কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষার সাথে যুক্ত। কোরআনেও আছে, বাইবেলেও আছে। তার মানে এখান থেকেই একটা প্রশ্ন উঠে আসে, এই ধর্মগ্রন্থগুলোতে ভোক্তা আচরণ বা মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য আরও কত সূত্র লুকিয়ে থাকতে পারে বলুন তো? সত্যি ভাবনার বিষয়।
একদম শুরুতে যে মাছের প্রতীক বা WWJD স্টিকারের কথা বলছিলাম, সেখান থেকেই তো বোল্টনের এই গভীর অনুসন্ধানের শুরু। ঠিক। যারা নতুন গবেষক তাদের জন্য এটা একটা দারুণ অনুপ্রেরণা হতে পারে। চারপাশের সাধারণ ঘটনা বা পর্যবেক্ষণ থেকেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্ম হতে পারে। এই কৌতূহলটা জিয়ে রাখাটা খুব জরুরি। একদম ঠিক। আর হ্যাঁ, লিসা বোল্টনের সম্পূর্ণ প্রবন্ধটির লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। যাদের আগ্রহ আছে তারা অবশ্যই পড়ে দেখতে পারে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। कभी आपने किसी दुकान की खिड़की पर बनी वो मछली देखी है, या किसी कार के पीछे लगा व्हाट वुड जीसस डू वाला स्टिकर? अजीब बात है ना, ऐसी छोटी चीजें भी किसी को कितना सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। जैसे लिसा बोल्टन को हुआ, और उन्होंने बाजार में धर्म के असर पर काफी गहरा सोचा, और इसी सोच ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखने के लिए प्रेरित किया। आज हम लिसा ई बोल्टन के उसी काम पर बात करने वाले हैं। ये जर्नल ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी JCP में छपा है, और हाँ, ये एक FT50 लिस्टेड जर्नल है, मतलब अकादमिक दुनिया में इसकी बहुत इज्जत है। ये भी बता दें कि हमारी ये चर्चा उस लेख के एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब LLM आधारित सारांश पर बेस्ड है, ताकि हम मुख्य बातें जल्दी से समझ सकें। लिसा बोल्टन पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के स्मेल कॉलेज ऑफ बिजनेस से हैं। हाँ, और ये जो लेख है ये अपने आप में एक टिप्पणी है। मतलब ये एगोल्जो और कोहेन के एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर पर एक तरह का रिएक्शन है। और ये सब JCP ने ही शुरू किया है, एक अकेडमिक बातचीत की तरह, विचारों के आदान प्रदान आप कह सकते हैं। बिल्कुल। और हम अपने सुनने वालों से, खासकर वो लोग जो अकेडमिक रिसर्च में नए हैं या अभी अपनी रिसर्च जर्नी शुरू ही कर रहे हैं, उनसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो ओरिजिनल लेख ज़रूर पढ़ें। बहुत ध्यान से लिखा गया है, रिव्यू किया गया है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, ज़रूर पढ़ें। खासकर अगर कोई ये समझना चाह रहा है कि धर्म या धार्मिक मूल्य जैसे विषय वो उपभोक्ता के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये चर्चा और वो मूल्य लेख दोनों ही काफी काम के साबित हो सकते हैं। हमारा मकसद है कि विषय की गहरी पर आसान समझ बना पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो साफ है कि दुनिया में बहुत से लोगों के लिए धर्म बहुत जरूरी है। अमेरिका, भारत, नाइजीरिया, प्यू रिसर्च के कुछ आंकड़े हैं। अमेरिका में करीब 53%, भारत में तो 80% और नाइजीरिया में 88% लोग मानते हैं कि धर्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ चीन में सिर्फ 3% या जापान में 10%। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उपभोक्ता व्यवहार पर धर्म के असर को लेकर टॉप जर्नल्स में, मतलब बड़े एकेडमिक जर्नल्स में रिसर्च बहुत कम हुई है। सोचिए, 2015 से JCP में सिर्फ 1 लेख, JCR में सिर्फ 3। बिल्कुल, और यही वो गैप है, वो कमी है जिसे बोल्टन अपने लेख में उठा रहे हैं। वो एगोल्जो और कोहेन के काम की तारीफ करते हैं, लेकिन उनका मेन पॉइंट ये है कि हमें उपभोक्ता के मूल्यों को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट गोल्स की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके धार्मिक आधार को, उनकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। पूरी तस्वीर तभी समझ आएगी। हाँ, और वो कुछ ऐसे मूल्यों का जिक्र करती हैं जो लगभग सभी बड़े धर्मों में कॉमन है, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म, सब में। जैसे प्रेम और करुणा, न्याय और निष्पक्षता, माफी और सुलह, आभार मतलब कृतज्ञता, और स्टूवर्डशिप यानी प्रबंधन, प्रकृति की संसाधनों की देखभाल। और ये दिलचस्प है कि बाइबल में भी, उत्पत्ति में और कुरान में भी इस देखभाल का जिक्र मिलता है। पर यहाँ एक पेच है, ये मूल्य सिर्फ धार्मिक लोगों में ही हो ऐसा नहीं है। प्यू का डेटा बताता है कि लगभग 69% धार्मिक वयस्क हर हफ्ते आभार महसूस करते हैं, पर ये भावना तो अधार्मिक लोगों में भी होती है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग धर्मों में इन मूल्यों पर जोर, उनका महत्व अलग हो सकता है। और फिर दूसरे फैक्टर्स भी तो हैं, जैसे किसी की राजनीतिक पहचान, वो भी व्यवहार पर असर डालती है। तो चीजें थोड़ी उलझी हुई हैं। जैसा कहते हैं ना, गॉड इज इन द डिटेल्स, शैतान विवरण में छिपा है, या शायद भगवान। सही कहा, ये जटिलता महत्वपूर्ण है। बोल्टन बताती हैं कि कैसे ये धार्मिक मूल्य उपभोक्ता व्यवहार से जुड़ सकते हैं, खासकर स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे पर, जो आजकल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs में भी है। जैसे प्रेम और करुणा, ये सामाजिक स्थिरता से जुड़ते हैं, भूख, गरीबी वगैरह।
और प्रबंधन का मूल्य वो जुड़ता है पर्यावरण की स्थिरता से, जलवायु, प्रकृति। उनके लेख का एक चित्र भी है जो यही दिखाता है। धर्म से आते हैं धार्मिक मूल्य और उनसे बदलता है उपभोक्ता व्यवहार। बिल्कुल, लेकिन जब हम असल दुनिया के सबूत देखते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस, तो नतीजे थोड़े मिले जुले हैं। उदाहरण के लिए ये जो स्टूवर्डशिप यानी देखभाल का विचार है, ये कभी कभी पृथ्वी पर प्रभुत्व, डोमिनेशनशिप के विचार से टकरा जाता है। मतलब ये सोच कि संसाधन तो बस इंसानों के फायदे के लिए हैं। हाँ, तो ये विरोधाभास पर्यावरण बचाने की कोशिशों को कमजोर कर सकता है। और फिर विज्ञान को लेकर शक या राजनीतिक झुकाव, ये सब भी अपनी भूमिका निभाते हैं। हाँ। तो धर्म एक फैक्टर हो सकता है, पर शायद अकेला नहीं या हमेशा सबसे जरूरी नहीं। तो अगर हम बोल्टन के मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में देखें, जो उनके लेख की टेबल 4 में भी हैं, तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहला, धार्मिक मूल्य धर्म से जुड़े हैं, पर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं। दूसरा, अलग अलग धार्मिक समूहों में मूल्यों की प्राथमिकता अलग हो सकती है। तीसरा, व्यवहार पर असर डालने के लिए जरूरी है कि धर्म उस खास स्थिति में प्रासंगिक हो और व्यक्ति की धार्मिकता का स्तर भी ऊंचा हो। चौथा, मूल्य आपस में टकरा भी सकते हैं, जैसा हमने स्टूवर्डशिप और डोमिनियनशिप में देखा। और पांचवा, बाहरी कारक जैसे राजनीति, संस्कृति, ये सब भी प्रभाव को बदलते रहते हैं। मुझे एक और बात बड़ी दिलचस्प लगी, बोल्टन का ये सुझाव कि हमें धार्मिक ग्रंथों को, जैसे बाइबल या कुरान, उनको और गहराई से पढ़ना चाहिए। शायद उनमें उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए और भी इंसाइट्स मिले, जैसे बर्बादी से बचने का सिद्धांत, वेस्ट नॉट वांट नॉट। या फिर मान लीजिए कोई कंपनी गलती करती है तो ग्राहक उसे माफ करेंगे या नहीं। ये अक्सर इस पर निर्भर करता है कि कंपनी कितना पश्चाताप दिखाती है, सुधार करती है। ये भी तो क्षमा वाले धार्मिक मूल्य से जुड़ा है। बिल्कुल, और यही हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, इन पुराने धर्म ग्रंथों के पन्नों में उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए और शायद नए रिसर्च पेपर्स के लिए और कितनी बुद्धिमानी की बातें, कितने नए रास्ते छिपे हो सकते हैं।